41 student. I think last class we have seen aluminum materials, right? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will wait again 2 minutes, but then we will start. We will see today, right? Aluminum alloy, duraluminum, right? And copper alloys, and the selection of material. Right? These three topics we will cover in this class. Let me send that to PPTs, right? Mother sucker. Right. I have sent the details, right, to group also and to your CR also. Right. सौरभ को भी मैंने भेज दिया है. Yes, sir. यस सर, मैंने ग्रुप पे डाल दिया सर. Oh. So we'll see one by one. Right. Already. Sir, I have doubt. Yes. Sir, in the last class, we studied about aluminium and everything. I have doubts related to certain terms. So what is carburization? Carburization is the heat treatment process. So what is the carburization means? Suppose gear is there and you want higher hardness. Yes, sir. Right. Some voice is coming. Let me stop him. Right. Suppose I want more hardness on the gear, right? So what I will do, that I will heat that gear material and I will put that gear in the environment just like a coal or charcoal, right? So that carbon will be absorbed on the surface of your gear, right? So carbide will be formed on the surface. Okay, So sir. that is nothing but the carburization process. So you will get the hardness on the surface of the gear. Right? That is Okay, sir. carburization. Sir, there are two more terms: hot shortness and temper embrittlement. Hot shortness means that is about your internal stresses, right? If it is not cooling properly, right? Some section is cooling very fast, some section cooling very slow. So there will be intermolecular molecular disturbances will be there, right? In single part, one portion is cooling rapidly, one portion is cooling slowly, right? So there will be some uneven cooling, right? So due to that uneven cooling, internal stresses will be developed inside the part, right? That is nothing but the your short hardness, right? Okay, sir. Hot shortness, sorry. So another is temper embrittlement, Yes, sir. right? Tempering is one of the heat treatment process
what they are doing, they are heating the material in a proper temperature and they are cooling slowly in the furnace. Right? That is tempering process. Right? Tempering embrittlement means there will be brittleness in particular area, right? There will be some brittleness in particular area, so that the whole part strength will be minimized in that portion. Right? समझो शाफ्ट है या फिर कोई प्लेट है, पर्टिकुलर एरिया पे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, राइट? तो उसको टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं, राइट? तो पर्टिकुलर एरिया पे अगर स्ट्रेंथ कम होगी, दैट मीन्स क्रैक और एनी प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एरिया ओनली, राइट? तो उसको टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं. Okay, thank you, sir. So 57 student came, right? I will share the screen now. So this is only 2 slides are there. Right. So we have already studied that what is mean aluminum and aluminum alloys, right? It is one of the type of aluminum alloy, duraluminum. So it is a alloy of aluminum, right? So what are the properties of these aluminums, right? So high strength to weight ratio, right? Relatively soft, ductile and workable in normal state. They may be rolled, forged, extruded, right? Rolling means suppose 2 rolls will be there, right? They will rotate in opposite directions, right? And inside the 2 rolls there will be one sheet. So to make a thinner sheets, right, we are doing rolling operations, right? So forging, right? Forged means that smith shop, right? Workshop का जो smith shop है, that is nothing but your forging. Extruded means to get the pipes, right? जैसे hollow pipes है, H sections है, right? I section है. So that are the product of extrusion process, or drawn into a variety of shapes and products, right? Aluminum generally क्या है? Ductile and malleable material है, right? So you can be rolled, forged, extrude or drawn into variety shapes and products. Their lightweight and consequent high strength per unit weight compared with the steels suits them for the aircraft construction. Right? So compared to steel, right, duraluminum is generally used, right, for the aircraft industries, especially for the construction purpose, right? So body parts, like the original composition has been varied for particular applications, right? So it may contain about 4% copper, right? 0.5 to 1% manganese, 0.5 to 1.5% magnesium, and in some formulation some silicon. Right? So again there are different varieties are there, but mostly the used composition is this one. After heat treatment and aging, right? Again aging is another heat treatment process, right? These alloys are comparable to soft steel in strength. So applications, aircraft already told, right? Because aluminum loses corrosion resistance when alloyed, a special laminated sheet form called alcad
is used for aircraft construction. It has thin surface layers of pure aluminum covering the strong ड्यूरेलियम कोर. ठीक, तो क्या है कि कंस्ट्रक्शन में आपको एल्यूमिनियम ड्यूरेलियम यूज होता है, उसको कवर करने के लिए अल्काइड यूज होता है. सो ड्यूरेलियम जो है वर्ड, ठीक, एक कंपनी थी ड्यूरेन जो जर्मनी में थी, उसके नाम से फिर ड्यूरेलियम है वर्ड आ गया है. राइट, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. तो ड्यूरेलियम क्लियर है? Yes, sir. Only Yes, sir. Yes, sir. so I will open another. Right, next we will see the copper one, right, and next after that one we will see we will open from the WhatsApp what I have sent to you. Right, it's now on your screen. Copper and copper alloys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Copper is the best conductor of electricity and heat, and they have good corrosion resistance. Right. Copper and its alloys are processed easily by various forming, machining, casting, and joining techniques. Right. So these are the manufacturing process you can adopt for the copper alloys. Copper alloys often are attractive for applications in which a combination of electrical, mechanical, non-magnetic, corrosion resistance, thermally conductive, and wear resistance qualities are required. Right, so many properties are there, right? So that's why copper is you will find in electrical and computer applications. You will see applications of copper. Right? Sir, what is wear resistance? Wear resistance means suppose one shaft is there, it is mounted on a bearing, right? And the shaft is rotating continuously, right? There should not be wear of bearing and shaft, right? So wear means there should not be any friction. If the friction is less, right, then wear properties will be higher, right? जिसमें आपको वियर होना मतलब है कि उसका डिस्ट्रैक्शंस मतलब उसका एक लेयर निकलना जाना, राइट? जैसे शाफ्ट है कंटिन्यूअस रोटेट हो रहा है, अगर आफ्टर सम टाइम्स इट बिकेम्स ओवल शेप, राइट, ओवल शेप हो जाता है. जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई मशीन्स है, इवन कुछ गाड़ी आपकी गाड़ी में भी, राइट, after some times wheel rotated, there should not be any alignment problem हो जाता है और आपका wheel जो है प्रॉपर जमीन से लेके प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं होता है, right? So one of the cause is having the wear. और हर मटेरियल्स में wear होता है, it is having some life, right? So that you have to go for the maintenance. तो अगर आप प्रीमियम क्लास में आप जाओगे गाड़ीज में, आपका मेंटेनेंस में भी कम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन इट्स वियर प्रॉपर्टीज. सो अगेन दे आर डूइंग सम कोटिंग्स, राइट? जैसे है मैंने बोल दिया कि मोलिब्डेनियम की कोटिंग आप
पिस्टन पे कर सकते हैं, राइट, बट दैट इज ऑप्शनल वन. If you can see the vehicles where molybdenum coating is not on the piston, right, so they are having less life, right? There will be higher wear, right? I think you got it. Yes, sir. So so application include electrical and electronic components, springs, coins, plumbing components, heat exchangers, marine hardware, and consumer goods, right? Cooking utensils, jewelry, and other decorative subjects. Right? So they have some properties. Based on the properties, you will get the applications. Right? So first property is important, then you have to go for the application. Right? So that is not the case while choosing the materials, that you want some any material means electrical components and you directly will choose copper. No, you have to see the properties first. So pure copper also can be used as a solid lubricant in hot metal forming operation. Right? तो जो कॉपर है lubricants, solid lubricants भी यूज किया जाता है. The most common copper alloys are brasses and bronzes. Right? So brass is a alloy of copper and zinc. Bronze is a alloy of copper and tin. This is important, right? Whenever brass and bronze will be, even copper alloys will come, right? So this should be written in the exam. Right? So there are different types of brasses. So what should be written in the exam, right? I am not concerned about the strength, right? Yield strength and elongation. But you should know types, right? Copper, what is copper? What are the types of copper alloys, right? And then brasses types, their names, their composition and their application. Right? So one by one we'll see. So even I don't bother about UAN ES number, right? So name should be there, composition and typical applications. So electrolytic tough pitch copper, right? So basically they are in the pure form of copper where electrical conductivity is most important, right? So 99.9% will be of copper and others will be just like oxygens and all these things, right? So even if you go for the spectroscopy, right? जब हम composition की बात करते हैं तो एक प्रोसेस होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? उससे आपको पता चलता है कि मटेरियल में कौन से अलाइंग एलिमेंट्स हैं, राइट? So they are used for the downspouts, gutters, roofing, gaskets, auto radiators, bus bars, nails, printing rolls, rivets, right? So see the percentage of copper important for the, suppose is the gasket, right? gasket मतलब जहाँ पे आपका लीक हो रहा है वहाँ पे हम गैस्केट यूज करते हैं, राइट? तो इजीली आपको एक तो कंडक्टिव है, राइट, और इजीली सॉफ्ट है, राइट? सॉफ्ट होने से क्या हो जाता है, वो एरिया जहाँ पे लीक हो रहा है दैट एरिया विल बी फिल्ड, राइट? तो लीकेज का क्यों होता है, राइट? सम दोनों इसमें गैप है, राइट? जैसे आपका टैप है, टैप कभी कभी लीक हो जाता है, तो व्हाट इज प्रॉब्लम, बेसिकली देयर विल बी गैप बिटवीन बेयरिंग और दैट शाफ्ट, राइट? होल जो है और शाफ्ट में बियरिंग फिट नहीं बैठता है या लूज फिट होता है, राइट? इफ यू पुट द गैस्केट, राइट, इन दैट वन, राइट, तो वो जो एरिया है वो आपको फिल अप कर देगा गैस्केट. सो इट इज सॉफ्ट मटेरियल, दे आर यूजिंग गैस्केट, राइट? रिवेट्स हैं, रिवेट्स
It's a requirement is it should be very soft. Next one is a red brass, right? So it's a 18% copper, right? Rest is a zinc, right? 85% copper, right? So whether stripping, right? Conduits and sockets, fasteners, fire extinguishers, condensers, heat exchanger, tubings, right? So it depends on your composition. You see the compositions based on that. Name is also there, right? Red brass is it should be having higher percentage of copper. Cartridge brass they are using for the cartridge. Right? Name came from that one. Right? Next one is a free cutting brass. Right? So it is very easy to cut. Right? Naval brass. Right? Used in the naval application due to the corrosion effect. Right? So this is there. You see the compositions. You see the applications. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So another is bronzes are there. Different types of bronzes are there, right? Architectural bronze, phosphor bronze, right? तो phosphor bronze आपका ये generally इसमें आपको bearings में मिलता है, right? Bearings में generally phosphor bronze use किया जाता है, right? I think it is there. I think it is not. No, fasteners only, faster, wire brushes, chemical hardware, textile machinery. But phosphor bronze is used for the bearing also. Right? Architectural bronze is there. Architectural extrusions, storefronts. Right? So I have taken this one from the Kalpak Jain books. Right? In Kalpak Jain books also you can see. So free cutting phosphor is also there. Phosphor bronze free cutting copper is brass is also there, right? So in that fashion you can remember. Nickel silver. So again there is a copper alloys. Right? Same is thing is there, but somewhat application you can see different applications, right? So it is not there that each things, right? You have to remember it, right? So most things you have to remember is what is meant by copper, what are the properties, what are the types of coppers, brass, bronze, what is meant by brass, what is meant by bronze, right? And what are the types of brasses and bronze, their composition, their applications, right? One thing. So got it idea something? हेलो आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, Adi. sir. Yes, sir. है? तो उसमें अभी इसमें देखो उसमें लॉजिकली ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ओनली कंपोजिशन बेसिस पे एक तो आप कंपोजिशन जो परसेंटेज कंपोजिशन है, अलाइंग एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द नेम यू आर गेट द एप्लीकेशन, राइट? तो टाइम इसमें लगाना पड़ेगा आपको, राइट? अभी मोस्टली आपके फेरस एंड नॉन फेरस अलॉयज हो गए हैं, राइट? फेरस एंड नॉन फेरस अलॉयज हो गए आपके, राइट? नाउ द टॉपिक इज हाउ टू चूज द मटेरियल. ओनली यू टॉक अबाउट. Excuse me, sir. यस. सर ये इतना सारा याद कैसे होगा? मतलब बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं.
बहुत सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा that's it। Okay, sir. तो ये तो याद रखना है। देखो मोस्टली आई विल नॉट आस्क दैट मच, मैं एक्सक्लूड कुछ कर रहा हूँ जो जरूरी नहीं है, जैसे कि स्ट्रेंथ वगैरह है, आई विल नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग्स, बट जो है आपका ब्रासेस ब्रॉन्जेस है, उसमें भी अगर एटलीस्ट यू शुड नो द अबाउट द परसेंटेज ऑफ कॉपर, राइट। Okay, sir. बाकी जैसे आपका फ्री कटिंग, जैसे फ्री कटिंग ब्रास है, इफ यू हैव रिटन कॉपर परसेंटेज एंड समवॉट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द जिंक एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। जिंक और टिन में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आई विल नॉट बॉदर अबाउट दैट, राइट। इट इज ऑलवेज बी देयर, राइट। और कौन सा भी जो मटेरियल है आपका, उसमें लिमिट दी जाती है, राइट। कौन Okay, सा भी sir. कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो कार्बन है, जैसे लो कार्बन स्टील है, यू विल बी लो कार्बन स्टील 0 to 0.3% है, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज द एग्जैक्ट वन, राइट। सो दैट विल आई विल कंसिडर इन द एग्जाम, Okay, sir. so at least you should know the types, right, copper percentage and applications, right? So I will not ask the other things also, जिंक का भी परसेंटेज याद होना चाहिए, टिन का भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, right? that I can exclude। तो पहला जो आपका चैप्टर है बहुत लेंथी है, अगेन वी हैव टू सी द प्लास्टिक्स, राइट। थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मो रेजिन्स है, राइट। दैट विल सी थर्मोसेटिंग, मतलब प्लास्टिक्स है, कंपोजिट्स है, राइट। कंपोजिट्स पे भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सो हाउ टू चूज मटेरियल, अब मटेरियल चूज करना है तो हाउ विल यू चूज मटेरियल, राइट। जनरली अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या करते हैं, इफ यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी अगर कार इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, राइट, सो देयर टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, राइट, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राइट। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इज taking technology from the aerospace industries, right. Most of the technology is from the aerospace industries to aircraft to this automobile industries, and after automobile industries they will go for the off-road vehicles, right, tractors, trucks and all these things, right. After that, the lower technology will be, you will find in the so home appliances and these things on your bicycles, right, toys, right, that we will see in the technologies, right. So if you see the lower technological sector, right, so what they are doing, right, mostly they will take, if it is not means standard one, right, standard parts nahi hai, right, but in that section you will get some different materials, but existing materials, right, existing material मिलेगा, मगर in the shapes and designs you will get the some creativity, right? But if you see the automobile sectors, right, most of the automobile sectors they are having same near about same technologies, right. अगर प्रीमियम क्लास का ले लिया तो उसमें आपका टेक्नोलॉजी का वाइल सेम लगेगा, राइट। लोअर सेक्शन, लोअर म्हणजे प्रीमियम से नीचे जाओगे, राइट, दे आर हैविंग सम सेम टेक्नोलॉजीज, same materials, right, mostly same materials they are using, right, only they will change the shapes and aesthetic aesthetically something new, right। मगर इसमें सारा देख लिया आपने तो मटेरियल्स अगर चूज करना है, दे आर यूजिंग सम स्पेसिफिक टर्म, राइट। पहले क्या करते थे कि उसको चोरी करना बोलते थे, नाउ द टेक्निकल टर्म केम बेंच मार्किंग, राइट, बेंचमार्क करना, right? वो नया वर्ड है, राइट, इन द इंडस्ट्रीज, राइट, यू हैव टू बेंचमार्क इट, राइट। सो हु इज हैविंग हायर मार्केट शेयर, राइट,
जैसे अभी इंडिया की बात करें तो मारुति सुजुकी का शेयर ज्यादा है इन द लोअर सेगमेंट ऑफ योर कार इंडस्ट्री. So you have to benchmark it, right? What they are using the practices, use that practice, capture some data, use that data as our product, right? एक तरफ से आप बोल सकते हैं चोरी है, but it is there in any industries. Even they are also using some technologies, right? Same technologies from the other industries, right? Aerospace industries or aircraft industries, right? So that is there. So our point is choosing the material, right? तो समझो अपने इंजन बनाना है for the off-road vehicles, right? What you will do? The existing tractors or trucks, they are using cast iron material, right? So you will exclude other things, right? Aluminum नहीं लगना है, right? Other composite material नहीं use करना है, right? And then you will come to that cast iron. Then you will see the because it is reliable, right? It is a lesser cost is there, quality you can achieve, you can get any shapes, right? After choosing materials, you will go for the manufacturing process, right? First thing is choosing material, then you have to go for the manufacturing process, right? पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं चूज करना है, right? पहले आपका मटेरियल चूज करना है. जैसे आपको कोई शाफ्ट बनाना है, समझ लो सिंपल वे में शाफ्ट बनाना है, तो यू विल सी द एप्लीकेशन ऑफ द शाफ्ट, राइट? Loads and all these things, then you will choose the materials, right? And then you will see the whether by which manufacturing process it is feasible one, right? You will not go for the direct manufacturing process and then choose the materials, right? Then I will see whether it is feasible in this load conditions or not, right? So we will see that some of the points are there, right? Clear? थोड़ा सा आइडिया लग गया मटेरियल Yes, sir. सिलेक्शन कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. In today's scenario, right? Right, I think it is coming on your screen. No, sir. No, sir. Yes, sir. I think it is coming. I think now it is coming on your screen. Yes, sir. Yes, sir. The selection of materials for engineering purpose, how to select it, right? So some diagrams are there, right? If you go, one handbook is there for the selection of materials, right? So there will some ash flow diagram is there, right? So strength, right? Strength and this all yielding properties are there, right? According to that, you have to make the graphs and you have to select the materials, right? That is there. But as far as your syllabus is concerned, right? So only you should know the points. The selection of proper material for engineering purpose is one of the most difficult problem. The best material is one which serves the desired objective at the minimum cost. Right? So you should know your objective first. Right? जैसे है मुझे अभी इसमें शाफ्ट चाहिए, right? Otherwise I want to design a crank shaft, right? So what are these applications, right? That objective should be clear one, right? And next thing is cost, right? So if you see, right, जो आपकी ऑटोमोबाइल का कॉस्ट होती है, right? ऑटोमोबाइल्स का टेक्नोलॉजी है that is one of the stagnant one, right? अभी stagnant थोड़ी सी
स्टैग्नेंट की तरफ है, राइट। तो उसमें क्या है कि जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट नियर अबाउट 70% होती है, right, and 30% are overheads, designs, right, all these things will comes in 30%, right. So it is heavy impact on the means component, right, whether it is feasible or not. Cost ज़्यादा है तो feasible होगा ही नहीं, right. So that you have to consider if the area is stagnant one, right, डिजाइन में जितने चेंजेस नहीं है, right. अगर आप कौन सी भी मारुति की भी गाड़ी ले लो, उसकी ले लो, तो इंजन जब चेंज करते हैं जस्ट दे आर एक्सटेंडिंग वन मोर, राइट, 4 सिलेंडर टू 3 सिलेंडर और 3 सिलेंडर टू 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर्स, बट डिजाइन इज सेम, राइट. So then they are not changing internally, right, most of the things, right. If you see the vehicles, right, so in most of the cases, right, they are using same parts, right, as it is, but there are some extension will be there, right. So in that case, cost is one of the main factor, right. अगर आप कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर साइड में देखोगे या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे, right, then you can say that material cost is lesser one but technological cost is higher one, right. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री ले लो या फिर आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग ले लो, राइट, दे आर हैविंग वेरी लेस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, राइट, मटेरियल कॉस्ट बहुत कम है मगर टेक्नोलॉजी कॉस्ट उसमें ज्यादा है, राइट. सो देयर दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द मटेरियल कॉस्ट बट दे आर बॉदरिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, right. So depends on the sector, it's right, it is there. The next point is, as engineer must be in the position to choose optimum combination of properties in the material at the lowest possible cost without compromising the quality, right. So quality को कभी compromise नहीं करना चाहिए, जितना लोड में आपका वर्क करना चाहिए उतना चाहिए, फिनिश जितनी चाहिए उतनी चाहिए, राइट. सो अदर्स यू शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ऑन. द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर of material depends upon several factors, that is composition, crystal structure, right, condition during service and the interaction among them, right. तो मटेरियल है तो उसमें कॉम्पोजिशन आएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स की स्टडी होनी चाहिए, राइट. कौन सी सर्विस कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. द परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल्स मे बी फाउंड satisfactory within certain limitations or conditions. However, beyond these conditions, the performance of materials may not be found satisfactory. So there should be a limit, right? So within limit, it should be performed well. So only these are the factors. Major factors, that these factors you should know only, right. The major factors affecting the selection of materials is component shape, right. अगर shape की बात करते हैं, right, if you want to have a better shape, right, you are not bothering about the strength and all these things, right. So sheet metal है, right, plastics है, easily you can mold it, right. And even अगर एज ए प्रोसेस बात करें तो कास्टिंग में आपको कौन सा भी आप शेप दे सकते हैं, राइट. तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज, राइट. कंपोनेंट अगर शेप की बात आते हैं तो डायमेंशनल टॉलरेंस, राइट. डायमेंशनल टॉलरेंस मींस एग्जैक्ट डायमेंशंस विद द टॉलरेंस, राइट, लिमिट्स, अपर लिमिट देयर, लोअर लिमिट, राइट. डायमेंशनल टॉलरेंसेस की बात आते हैं तो यू हैव टू डू मशीनिंग्स, राइट. There are different types of machining operations, right. Even computer numerical control is there, right. CNC machines, that name is there, computer numerical control machines, right. So now previously, right,
So each machine is handled by some man only, right? Nowadays they are handled by one machines by one computer. Nowadays they are DLC, direct numerical control, right? One computer will control all machines by giving them a sub program, right? Programming की जाती है और that all programs of all machines will be in the one server, right? And that will be controlled, right? So you can reduce the manpowers and all these things. But that is there. Mechanical properties, yes, strength required, right? सब प्रॉपर्टी चाहिए, टफनेस, हार्डनेस या फिर आपका ductility, malleability, right? According to you can choose. Fabrication requirement, right? Fabrications means you have to able to join it, right? जैसे है आपका फैब्रिकेट करना है, मतलब असेंबली करनी है, राइट? उसके बाद उसकी असेंबली भी होनी चाहिए। ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मटेरियल चूज करना है। सर्विस रिक्वायरमेंट, राइट? इजी टू सर्विस, राइट? जैसे कि आपका बियरिंग है, राइट? तो बियरिंग का सर्विसिंग की जरूरत होती है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू चूज द मटेरियल, राइट? बियरिंग का मटेरियल बहुत हार्ड होता है। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, यस, चीप मटेरियल सेलेक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, राइट? प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, जैसे आप मशीनिंग कर रहे हैं, राइट? एडिशनली आपको ये करना है, हायर फिनिशिंग के लिए जाना है या फिर रेसिस्टेंस देना है, जो भी कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, राइट? जो अवेलेबल होगा उसको आप पहले चूज करोगे, राइट? यू विल नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, इम्पोर्टिंग कॉस्ट विल बी हायर if it is not available in the Indian market, right? It is really difficult again to manufacture and to meet the requirement, right? So these are the 8 points are there, you should know, right? थोड़ा सा क्लियर हो गया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So these 3 points are covered up, and now in next class I will take the plastics, right? Plastics and next composite. Then I will take your this surprise test or class test. Or for the class test, I will take the I will inform you all the syllabus and all these things, right? Right? कुछ doubts हैं? No, sir. नो सर। सर ये टेस्ट के बारे में बता दो दोबारा, मेरा नेटवर्क चला गया था। नो सर। हेलो सर। यस सर ये टेस्ट के बारे में जो आप रिपीट बोल रहे थे ना, वो रिपीट कर दो एक बार, मेरा नेटवर्क चला गया था। टेस्ट का मैं आपको सब इन्फॉर्म करूंगा, राइट? कब लेना है, राइट? कितना सिलेबस रहेगा, राइट? सरप्राइज टेस्ट इस साल तो नहीं होगा ना? नहीं, इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर में। ओके सर। ओके सर। और ठीक है, नेट अटेंडेंस लेने दो उसको, राइट? सर सर मुझे आपको सर कल और आज की क्लासेस मतलब 3 क्लासेस की अटेंडेंस भेजनी है सर, मैं शाम तक भेज दूंगा सर। ठीक है, ये आज की ले ली? हाँ सर, आज की ले ली सर मैंने सर। अच्छा, अरे अभी फिर इसका एक डिस्कस करना है आपको। डिस्कस कर लिया था मैंने इनोवेटिव प्रोजेक्ट का। नहीं सर। सर आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। इनोवेटिव प्रोजेक्ट का देखो, सर एक बार दोबारा बता दो। कर दो, राइट? काम करना चालू कर दो, और कुछ इश्यूज है, अगर चूज करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना है। सर सपोज एक प्रोजेक्ट 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि अभी फिजिक्स में भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट का है,
तो वो सेम हम्म। प्रोजेक्ट हम दोनों सब्जेक्ट में सबमिट कर सकते हैं अगर वो दोनों के लिए ही फिट होता है तो। दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ओके सर। आज एग्जैक्ट आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल्स में उसमें फिजिक्स में भी स्टडी हो सकती है, तो उनके सिलेबस से उनका प्रेजेंट करना है, इस सिलेबस के हिसाब से इसको प्रेजेंट करना है। ओके सर सर। सर प्रोजेक्ट टॉपिक फाइल विल बी बना सेम, टॉपिक कैन बी सेम। सर प्रोजेक्ट फाइल बना के देनी है। पहले तो मुझे 15 जनवरी को आपको आपका आइडिया जो भी है वो उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना है। राइट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपका जो थीम है या आइडिया है, राइट, इसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस करके या थोड़ा सा ये करके शॉर्ट फॉर्म में सबमिट करना है। 1 पेज इज इनफ। सर जो फाइल है अभी उसमें वो फाउंड्री मैनुअल वाला ही लिखना है ना अभी बस। हाँ, फाउंड्री में एज इट इज जैसे है वैसे लिखना है आप। ठीक है सर। ओके ओके, देन anybody is having doubts, otherwise I will close this session. नो सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर डाउट।